नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है एक मुलाकात। इसमें हम आपकी मुलाकात किसी लेखक, लेखिका या कोई भी क्रिएटिव पर्सनालिटी से करवाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारे इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ एक लेखिका जुड़ी है, परवीन साकेत। तो परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू उषा जी, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। तो मैं आपका परिचय देती हूँ। Ms.Pervin Saket is an award-winning poet who won the Srinivas Rayaprol Poetry Prize 2021, one of India's leading English language poetry competitions. She is the author of Urmila, the retelling of a mythical tale of love and longing, and of poetry collection A Tinge of Turmeric. She is the 2021 Fellow for the Vancouver Manuscript Intensive, mentoring young international authors. Her novel has been adapted for stage performances and dance recitals. Her work has extensively featured in the Indian Quarterly, the Joao-Roque Literary Journal, Paris Lit Up, Singapore Unbound, Usawa Literary Review, Tiferet, etc. Pervin is a school textbook editor, poetry editor, and co-founder of the annual Pukht Writers Workshop. She has recently authored 4 books on inspiring women in science, published by Adidev Press. आपका फिर से स्वागत है। आपके बारे में अभी जो मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। तो परवीन जी, एक बात बताइए, अभी तो आप एकदम यंग हैं और एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से आप लिख रही हैं। तो ये लिखने की प्रेरणा आपको कब मिली? बचपन से ही आप राइटिंग में थी? हु इंस्पायर्ड यू? व्हाट वाज द जर्नी लाइक? अच्छा, ओके। एक्चुअली नाउ व्हेन आई लुक बैक, जब मैं सोचती हूँ तो आई रियलाइज दैट एज अ चाइल्ड बुक्स वर माय बेस्ट फ्रेंड्स। मैं काफी इंट्रोवर्ट हूँ अभी भी, और जब भी मौका मिलता था आई वुड ग्रेविटेट टुवर्ड्स अ बुक। सो एक्चुअली मेरा ड्रीम था, ये नहीं था कि मैं बुक्स लिखूं। माय ड्रीम वाज टू बिकम अ रीडर, नॉट टू बिकम अ राइटर। बट बिकम अ रीडर ऐसा कोई प्रोफेशन तो है नहीं। एंड मुझे कुछ ऐसा करना था ताकि जो मुझे एक्चुअली करना है मैं पूरा दिन उसमें थोड़ा लगा दूं एज मच एज पॉसिबल, और साथ में ये भी चलता रहे, सो आई वांटेड टू एक्चुअली फुलफिल माय ड्रीम। एंड इफ यू सी कि इफ यू कंपेयर कि मैंने कितनी बुक्स लिखी है और कितनी बुक्स पढ़ी है तो यू विल रियलाइज दैट माय ट्रू जॉब इज अ रीडर। सो आई in order to, like, I'm working on a new poetry collection right now, and वो तो adults के लिए है। एंड वो एक पोएम थी जहाँ पे आई वाज फीलिंग स्टक कि ये मुझे बिगिनिंग पसंद नहीं थी उसकी। तो वो बिगिनिंग बनाने के लिए आई रेड सो मेनी अदर पोएम्स टू गेट अ सेंस ऑफ द ऑप्शंस, द आइडियाज, द क्राफ्ट। और फिर मैंने वो बिगिनिंग लिखी और फिर नेक्स्ट एडिट में उसको निकाल भी दिया। लेकिन लेकिन इन द प्रोसेस आई रीड मच मोर देन आई राइट। सो आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ रीडर, and writing is a byproduct of being a passionate reader. ओह, सो ग्रेट। सो देखिए, ये तो कहा ही जाता है कि जितना अच्छा आप लिखना चाहते हैं उससे ज़्यादा आपको पहले पढ़ना होगा जिन्होंने अच्छा लिखा है, और इवन आसपास ऑब्जर्व करना होगा। जितना हम ज़्यादा देखते हैं, पढ़ते हैं, उतना वो हमारे दिमाग में बैठता चला जाता है। और शब्दों के तो खेल होते हैं ना, जो ब्रेन में Correct. चलते हैं, है ना? तो वही Absolutely. आपके साथ हुआ। तो क्या बचपन में भी लिखा आपने? किस एज पर आपने शुरू किया लिखना? मैं तो हमेशा से लिखती हूँ, लिखती रही हूँ, बिकॉज वो एक फ्रेंडशिप बन गई, ओह, विथ योर ओन वर्ड्स, विथ योर ओन अबिलिटी टू एक्सप्रेस स्टोरीज। बचपन में हम डायरीज रखते थे, yes. जर्नल्स रखते थे, सो इट बिगैन लाइक दैट।
अभी तो जब मैं देखती हूँ तो वो तो बहुत एम्बैरेसिंग लगता है कि वो क्या चाइल्डिश था, बट वो जो लड़की थी उस पे बहुत प्यार भी आता है, दैट दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड सी हाउ फार शी हैज कम. आई फाइंड इट वेरी स्वीट, यू नो. आपने कहा वो जो लड़की है. आई मस्ट से दैट, यू नो, बिकॉज मैं किसी एक और को भी जानती हूँ कि उन्होंने क्या किया, वो भी ऐसे ही खूब लिखती थी डायरीज और अपने बेड के पीछे डालती जाती थी, यू नो, कि कोई देखे ना. और उन्होंने राइट. बहुत सारी डायरीज लिखी. फिर एक दिन उनको मन हुआ कि शी विल गो टू लर्न हाउ टू राइट अ डायरी. ठीक है. तो वो बाहर की बात है. एंड शी टुक हर डायरीज एंड शी सेड आई वांट टू गेट एनरोल्ड इन योर कोर्स. Then they said, my God, you have already written so much. Why don't you start a course here? Absolutely, So I absolutely. What came. we actually we are always in the process of writing and experimenting, playing, reading. We've already picked up the skills that Yes, we need to become a writer. So learning all has been going on for many years. very And good. yeah, that is how the journey began. And I'm very fortunate. There are lots of people जो dreams रहते हैं बचपन में, but they are not able to live their life according to that. There are constraints, there are limitations. So I find myself very privileged and very blessed, and I try to earn it. I try to deserve it every day, and Beautiful. it is a gift for me. And the best way, one of my teachers told me that the best way to appreciate a gift is to use it. Wow. So that is the way in which I'm appreciating this मुझे तो लग रहा opportunity. है कि आपकी टीचर्स आपको बहुत प्यार करती होंगी, बहुत बीबी सी बच्ची होगी और सब काम एकदम सही तरीके से करना, है ना? ऐसा लगता है मुझे आपको देखकर कि बहुत सलीके से सारा काम करके मैम को देना मेरी है. एक्चुअली एक टीचर है, मेरी जो इंग्लिश टीचर है, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, बहुत एनकरेज किया है. अभी भी अगर बॉम्बे में कोई रीडिंग होती है, कोई बुक लॉन्च होती है, तो वो रहती है वहां पे. वाओ. She's Mrs. Wadia. I call out to you, shout out to you. Thank you so much. She is an inspiration. She's an institution actually. उन्होंने वाओ. बहुत राइटर्स को इंस्पायर किया है. अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है. तो आपने उर्मिला भी लिखी. व्हाट इज देयर इन उर्मिला कि आपको वो आप खिंचाव महसूस किया एंड यू रोट रीटेलिंग किया आपने. व्हाई, लाइक व्हाई डिड यू? Right. Like I said earlier, that I'm quite shy. So as a result, I think I get gravitated towards other shy people or other people who don't get to say their story or who don't speak much. पार्टी भी होती है ना, तो लोग वहां पे जाते हैं जहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट चलता है. I go towards I've noticed the people who are quiet, जो कुछ बातें नहीं करते. So when I'm reading a book also, I'm not only interested in the hero's journey, I'm also interested कि वो पेज 57 पे कौन आया और पेज 58 पे चला गया. Right? So when we think of the epics, Yes. there are lots of characters who they are not the main characters and they have not got that same kind of importance, but their emotional space, their emotional journey is something I'm drawn towards. And especially with Urmila, I started to imagine this woman who is bound in marriage. She's in love with her husband, and her husband makes a choice of his brother rather than choosing her. When it comes ke aap 14 saal kiske saath bitaoge, that is what he chooses. And the hurt that she feels as a result of that is what that is that emotional space I wanted to explore. But मुझे mythology or epics वहाँ पे नहीं जाना था. I wanted to place it in a modern, contemporary, relatable setting for young people today. And that's why the book is set in Bombay. It's a very contemporary story. It has been placed here. So it's a political family, it's a business family. And there are political reasons because of which the elder brother has to leave the country. And the younger brother chooses to follow him. So that span of 14 years is what my Urmila explores, and she grows, she changes.
And she, of course, has become a very different character from what we know of the epics. But that's the seed. That is where it all began. बहुत सुंदर। तो आप माइन्यूट डिटेल्स तक जाती हैं, है ना, और चरित्र तक जाती हैं, फिर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखती हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है कि कंटेम्प्रेरी होने से सब लोग उसको रिलेट कर पाते हैं आराम से उसको। तो अभी अभी मैंने देखा कि हमारे पास ये एक नई सीरीज आई है, ये विमेन इन साइंस की, है ना, जिसमें आप ही की 4 किताबें हैं, है ना। इसमें इनके इलस्ट्रेटर्स अलग, देखिए कितनी सुंदर इनकी पैकिंग है। ये बोर्ड बुक्स हैं और मुझे बहुत ही प्यारी लगी ये किताबें, जो कि विमेन इन साइंस, है ना। जैसे कि आपने इसमें लिखा है आनंदीबाई जोशी के बारे में, विभा चौधरी के बारे में, अदिति पंत और जानकी अमल, है ना। तो एक जो अच्छी खासियत है भाई, ये बोर्ड बुक है, ये तो अच्छा है। चित्रांकन भी बहुत सुंदर है और सभी चित्र करने वाले सभी में, चारों में अलग अलग हैं जिन्होंने इलस्ट्रेट किया, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पर मुझे चित्र भी बहुत प्यारे से लग रहे हैं, एकदम चिल्ड्रन फ्रेंडली है, बच्चों के हिसाब से बने हुए हैं। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने इन कैरेक्टर्स को चुना कैसे? राइट, एक्चुअली मेरी बात हो रही थी विद मिसेस चितवन मित्तल, शी इज द पब्लिशर ऑफ आदिदेव प्रेस, एंड हम बात कर रहे थे अबाउट विमेन and role models for children, and very often children don't have role models from India, जबकि बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्होंने काफी कुछ किया है अपने फील्ड में, and especially women, and when women have achieved something in their field, it is not only कि उन्होंने साइंस में कुछ किया है, but in the process of doing that उन्होंने सोसाइटी को भी चेंज किया है, क्योंकि नहीं तो वो कर ही नहीं पाते. So it is a double contribution that these scientists have made. So that is the reason why we decided that हम scientists role models ढूंढेंगे, लेकिन women scientist role models, because they have battled on 2 fronts. Yes. Scientific भी advancement भी किया है और society को भी battle करके they have achieved that. So it is they are very inspiring for all of us. And the reason, like I said, I gravitate towards people jinko they have not had their say. Yes. They are not that well known or that famous. So that's why we chose Indian women scientists who many people have said before we read this book, we had not even heard of these women. So it was a deliberate attempt to bring them into the conversation, bring them into the space where children engage with them and they enjoy their stories, they feel inspired by their stories, and they feel excited. Girls especially get excited about science as well in the process. और इसमें साइंस में भी आपने चारों अलग अलग फील्ड ली हैं, है ना। हाँ जी। जैसे कि आप बताइए आनंदीबाई जोशी जी के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने मतलब इन सब के बारे में रिसर्च कैसे किया आपने, लाइक काफी अंदर काफी ज्यादा सोचना पड़ता है। लिखा बच्चों के लिए है ना, लेकिन रिसर्च तो पूरी चलती है, नहीं तो चलेगा नहीं वो तो है। फॉर्चुनेटली हमारे टीम में हिस्टोरियन भी है, उन्होंने बहुत हेल्प किया. वी मेड श्योर टू दैट ऑल द सोर्सेज आर वेरी क्रेडिबल, बिकॉज बहुत सारे जो साइंटिस्ट है उन पे इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है. सो वी हैड टू सर्च क्वाइट अ बिट. The full team worked for that, and Anandibai Joshi's story is very inspiring. She's the first Indian woman medical doctor, and जब वो बहुत छोटी थी तब शादी हो गई थी, and then she had a child and she lost that child because of medical reasons, and she decided that I want to make sure that medical help is available for all women and children. And तब तो बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए, एंड शी वर्कड वेरी हार्ड, शी गैदर्ड फंड्स, वो अब्रॉड गई, शी स्टडीड, शी केम बैक. तो all of them have got similar stories like जैसे that. कि विभा जी का भी है, विभा जी का ये जो है Yes, and विभा चौधरी का तो इनका तो मैं देख रही थी, हाँ, कि ये बल्कि इनको कहीं नाम भी नहीं हुआ इनका जो इन्होंने
इन्वेंशंस किए, एब्सोल्युटली एंड जो इनके साथ जिन्होंने उनको काम मिला। किया हाँ उनको नोबेल प्राइज मिला हाँ। है। हाँ जी। बहुत अच्छी लाइन भी है लास्ट में जो आपने इंस्पायरिंग लाइंस लिखी हैं उसमें कि कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो अपना काम करते, मैंने ये बहुत प्यारी चीज है, यस इतना हो नहीं पाता, कठिन है बहुत ही बात है ना, कि अगर नहीं मिल रहा आपको रिकग्निशन तो यू फील बैड, लेकिन उससे ऊपर आ जाना, यस है विच ना। इज व्हाट शी हैज टॉट बिकॉज यस बार बार उनकी लाइफ में वैसे हुआ यस। दैट शी वाज वर्किंग ऑन द टीम, लेकिन टीम मेंबर्स को रिकग्निशन मिला, उनको नहीं मिला, बट शी डिड नॉट केयर। उनका इतना कमिटमेंट था एंड हर फोकस वाज ओनली ऑन हर वर्क एंड हर contribution, her job, and that is inspiring. Very often we get inspired by the यस fame, we get यस inspired by the success, but यस। we wanted to, I was very passionate that I should write about people who are inspired by the actual work, because fame, success, these are all things which are outside our control. यस। But the way we have a relationship with our work, that is what I was drawn towards in her story. बहुत And प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात बोली। इसी तरह अदिति पंत के बारे में भी आपने लिखा है, इनके बारे में बताएं। yes, yes. In fact, Aditi Pant ये is तो one of those women scientists. She's still alive. अच्छा, ओके, She's वाओ, still around, and or she's an या oceanographer, and the first Indian woman to go and study in the South Pole, in the Antarctic. यस And people are a little surprised कि oceanographer कहाँ से, यस यस। but the but we wanted to introduce modern scientific careers, not only जो अभी medical तो है ही, but we wanted more than that. So that's why we have an oceanographer, we have a physicist, we have uh, Janki Amal, who has worked with plants, यस and in fact she has given us the sweetness in our food. यस। And unke contributions, because of that, so many farmers have also prospered. आज जो हमारी Indian sugarcane है, it is sweet because of the changes she has made. जी। So we wanted to connect कि जो children के लिए relatable हो, जो उनके life में चल रहा है, and future science careers also, not just जो पहले जो traditional science careers हैं, सिर्फ उनके बारे में हमको नहीं लिखना था. That's why we chose this combination. और ये किताब थोड़ी अलग इसलिए भी लगी मुझे क्योंकि इसमें आपने पोएट्री को यूज किया है। लाइक Aditi Pant is an oceanographer who reached the Antarctic Pole. Her passion for science and adventure she combined for her career goals. So यहाँ पर ये जो है आपने राइमिंग डाली है, तो अधिकतर हमने किताबों में देखा स्टोरी बुक्स होती हैं, है ना, और आपने देखिए थोड़ा सा तो गंभीर विषय है लेडीज के लिए, और ऊपर से साइंस, और ऊपर से पोएट्री, सी ये तीनों ही लेवल पे थोड़ा अलग जा रही है। करेक्ट। तो एक्चुअली पोएट्री यूज करने का, क्योंकि आप खुद पोएटस हैं, तो शायद रुझान इसलिए था इस तरफ, या थोड़ा अलग करना चाहती थी? वो तो है ही that I'm drawn towards poetry, but also कभी कुछ difficult चीजें जब express करनी होती है, it is easier for children to receive it if it is in rhyme. Because they are familiar with rhyme, they know how to work with language with rhyme. अभी इसमें थोड़े difficult words भी है, जैसे perseverance या commitment. So the idea was, how do we balance the complexity of the subject matter and give simplicity in how we are conveying it? Because और जो ये science कर रही है these ladies, वो मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आता, right? It's very complex science, so we have to, but we have to still keep the essence of that and convey it to the children. So poetry seems to be the best medium to be able to do that, because there's a rhythm, there's an internal music that poetry allows. So it becomes more memorable and it becomes more interesting for the child also. इवन चित्र में भी ना काफी अच्छे चित्र हैं, तो जो लिखा हुआ है बच्चे को समझ भी आ रहा है, और साथ में वो आज थोड़ी मुश्किल से पढ़ेगा फ्रेंड्स के साथ, मम्मी पापा के साथ
पढ़ेगा स्कूल में अगर है टीचर्स के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे ना ये लाइंस जैसे हमें पोइट्री लर्न हो जाती है तो वो हो Correct. जाएगा मुझे लगता है, और ये रच बस जाएगा अंदर, राइट? Absolutely. जो राइम में होता है वो हमेशा बैठ जाता है ना बैठ in जाता our है। heads. So that was one of the reasons. So the balancing of complexity, because we didn't want to compromise के जो actual story है या message है, we didn't want to compromise that. So we had to choose a medium to make it fit in that. And the illustrations, like बहुत you सुंदर। said, they are beautiful. And जो बातें वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाती वो इलस्ट्रेशन में आ गई है बिल्कुल बिल्कुल। in a very very beautiful way. I love all four of them. या And it's very nice that there were different illustrators because यस। they have brought their own style, their own signature मैं for दिखा दूं into each दर्शकों book. को, कितना सुंदर है, देखिए आप, बहुत सुंदर है। और एक चित्र से बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती हैं, फिर वो और भी आगे देखेंगे ये क्या है, इसका नाम क्या है, ऐसे और भी कितने टेलीस्कोप हैं, है ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें आएंगी सामने। तो इस तरह से इन्होंने कॉन्स्टलेशंस वगैरह सब दिखाए यहाँ पर, तो अच्छी चीज है। तो और आपको क्या जैसे लगता है आपने कि दिखाया हाँ कि इलस्ट्रेशंस के बारे में हमने बात की बीबा चौधरी की, जी शी जी, डिडंट गेट द रिकग्निशन. यस इफ यू यस, सीन द नाम, इलस्ट्रेशन, हाँ, उनका ब्लैकआउट हो गया है. यस यस so यस यस, so it is to express that सही बात, idea that हाँ, she didn't even here on in illustration her face is not visible. यस, So there's a lot of बैकग्राउंड thought. में चली गई है ना, ऐसा। Hmm. बहुत सुंदर। तो आपको क्या लगता है ये किस उम्र के बच्चों के लिए सही रहेगी? So हमने we kept in mind age groups 4 to 8, and like you said कि 4 to 8 में भी काफी range है. So initially 4-year-olds can start. I myself have a 4-year-old niece, so they आपने can start ट्राई एंड टेस्टेड हो गया। tried and tested by reading with their parents. And then gradually, by the time they are 7, 8, they can do independent reading also. So it is across this range. That's why the words are also a combination of simple and complex. So there is something to gain for every age group, something to learn for every age group. बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जैसे कि देखिए 1 सवा साल का जो बच्चा होता है, चूंकि ये बोर्ड बुक है ना, तो क्या है कि चाहे आप वो ना बताइए जो आपने लिखा है, चित्रों के माध्यम से तो छोटा बच्चा बहुत कुछ समझता है ना, चित्र Right. देखेगा तो ये क्या है वो क्या, बहुत पूछते हैं बच्चे, और 5 साल तक की एज में तो मैक्सिमम क्वेश्चन होती है उनके ना। तो ये जो बुक्स है ये ऐसी हार्ड बाउंड बुक्स हैं कि ये फटेगी भी नहीं, आराम से बच्चा देख सकता है, बैठ सकता है। मतलब मुझे तो लगता है 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल कोई भी बच्चा इसको पकड़ेगा, पलटेगा तो बहुत कुछ उसको समझ आएगा, और चित्रों के माध्यम से भी हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। तो ये किताब चाहे 4 साल के बच्चे को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल की एक अलग होगी, उनके वर्ड्स की समझ अलग होगी, पर जो पिक्चर्स का काम है वो तो बहुत पहले ही शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये बहुत ही मुझे प्यारी लगी किताबें, और काफी सुंदर, साइज भी अच्छा है, और ऐसे बॉक्स के अंदर चली जाती है तो और भी क्यूट लग रही है ना। तो बच्चों के लिए संग्रह है घर के लिए तो बहुत अच्छा है। तो बच्चों के लिए लिखना आपको टफ लग रहा था? Actually, it is tough. It is not easy to write for children. हमें लगता है कि वो वर्ड्स छोटे हैं तो इजी है, या फिर अगर ये अभी इसमें पिक्चर्स ही इतने हैं कि टेक्स्ट सिर्फ 2-2 लाइन है पर पेज. So there is an impression, a wrong impression that it is easy. But it is perhaps the most difficult thing because there's a great responsibility on the writer to make sure that the idea, you're true to the idea. And these are, in this case, they're real people. It's not an imaginary story. So to stay true to the idea and to try and make it work with a child's mind and what they already know. So it is not easy.
मैं बच्चों के लिए भी लिखती हूँ, I write for adults also, and writing for adults is easier, या no doubt. यहाँ पर शब्दों का चयन भी है, साथ में पोएट्री में लिखा है आपने, तो वो भी एक चैलेंज होता है कि वैसा ही इजी, थोड़ा टफ, वटेवर आपने मिक्स किया है, इतना आसान नहीं है जितना दिखता है ना? अगर आसान दिखता है तो हमारा काम हो गया है, काम हो गया। यस, because yeah, it should be यस, invisible work. यस, यस, The यस, effort should not show for the बिल्कुल reader. सही बात है। तो परवीन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इन डेप्थ पता लगा कि आदिदेव प्रेस ने ये जो किताबें निकाली हैं इनके पीछे का रहस्य क्या है, क्या सोच के आपने ये काम किया और क्यों उन्होंने आपको अप्रोच किया। Thank you, Usha ji. I really enjoyed this conversation, and thank you for having me here. मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, आशा करते हैं और भी लोग इसको देखेंगे, जानेंगे, स्कूलों में भी पढ़ी जाएगी ताकि ये किताबें बच्चों तक पहुंचे और वो इनका लाभ उठा सके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग Absolutely. हियर। थैंक यू प्रवीण जी, Thank you. नमस्कार। Namaskar.